Shri Ram. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Ram Ram to everybody joining this session. We are at third chapter of shrimadbhagwat Geeta, that is selfless work, Karma Yoga. Verse 3.07 Yastvindriyani manasa niyamyarabhterjuna कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते. यस्तु इंद्रियाणि मनसा, यह तु इंद्रियाणि, दोज इंद्रियाणि from the senses, mansa by the mind, niyamya, that means controlling, those who with senses and mind getting controlled do work. That means though they do work but not indulge with their mind and with their senses to that work. That means the work is offered to ultimate power, that is Lord. Ya tu indriyani manasa niyamya arabhterjuna. That means arabhte, they begin work. Arabhte Arjuna, O Arjun, those who begin work without any sankalp, without any determination that I will gain this, I will achieve this. So they do not do it for the pleasure of body, but they do it for their progress, for their renunciation with God. So those who are doing work, beginning work, niyamya arabhte, beginning, arabhte, that means beginning work, by controlling their mind and senses. They do not involve their senses and mind in the work. They keep their mind and senses at the feet of Lord. Because everything in this world, it is bestowed to us by God only. So the sun shines for us and the soil gives us the nourishment, best of it to us. Even the air which blows ultimately enables us to hear sound. So everything in this world, it is for me. So what we do by the power of this world made by God, its offering, its results, its fruit should be at the feet of God. So if person is doing in this manner, then God ultimately unites us with her. Yastu indriyani manasa niyamyarabhterjuna karmendriyais karma yogam asakta savishishyate. Karmendriye, karma yogam. So they are doing work. Karmendriye, so by the working senses. So there are some cognition senses. कुछ हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रियां हैं और कुछ कर्म इंद्रियां हैं, जैसे हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्रियां हैं. तो उनसे वो काम तो करता है. कर्म इंद्रिय है कर्म योगम. वो that person is doing work with complete focus. That means it is not that the work is lagging or sluggish. The work is done in a complete perfection. Why it is done in complete perfection? Because the work is also offered at the feet of God and its fruits are offered at the feet of God. यदि हम भगवान के मंदिर को सजाते हैं तो बहुत अच्छा सजाते हैं, फिर हम जो कर्म है वो भी भगवान को यदि अगर हम समर्पित करने के भाव से करें तो वो कर्म बहुत अच्छा होगा और उसके फल को भी हमें भगवान को समर्पित करना है. सो वॉट एवर वी आर डूइंग इज टू एड आवर ट्रिब्यूट. हम अपना योगदान दे रहे हैं. इट इज़ टू एड आवर ट्रिब्यूट इन दिस नेचर, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड मेड बाय गॉड. दिस इज द
institution for us. We are here students, so we are doing our best to get the best result. Karmendriya karma yogam. So we do work with our karmendriya. So that is working senses, karma yogam. Asaktah savishishyate. That person is said to be asakta, not attached. Savishishyate, and that person is superior. What is the literal meaning of this shlok? But O Arjuna, one who engages in karma yoga with organs of action. Karma yoga means, what does it mean by karma yoga? We do work with full perfection without the need or without the greed of its fruitive results. So when we do work but we do not go for the fruitive results, then it is called karma yoga, that is selfless work. But O Arjuna, one who engages in karma yoga with the organs of action, controlling the mind and senses, then that person becomes unattached and also excels. That person excels. It is superior. So it is more important that how we do work. That it is not the work. Once Shakespeare has said, it is the not the work, but our attitude towards work, that is more important. So कर्म नहीं बांधता, कर्म के पीछे जो हमारी विचारधारा है वो हमको बांधती है. The person, if the knife is in the hands of a goons or dacoits, then that knife may be used to kill others. But the same knife is with surgeon, then that knife may save a life. तो वही एक चोर के हाथ में अगर चाकू है तो वो दूसरों को मारने के लिए है, और सर्जन के हाथ में है तो बचाने के लिए है. इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है. द वर्क इज नॉट ए फाउल. कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, उसके पीछे जो हमारी कर्म करने के प्रति भावना है वो उससे कर्म महत्वपूर्ण हो जाता है. The word karma yoga has been used in this verse. It consists of two main concepts, that is karma and yoga. What is karma? That is whatever occupational duties we do. So some moral duties are there, some occupational duties are there. So all we do, some duties are done for our body itself. So that is the karma. And yoga, if we do it with the union of God, we never forget to God, though we do work, but never forget to. Hence a karma yogi is one who performs worldly duties while keeping the mind attached to God. Such a karma yogi is not bound by karma even while performing all kinds of work. Such a person is padma patram ivam bisa. जैसे कमल की पत्तियां कीचड़ में भी रहने पर उससे लिप्त नहीं होती, इन द सिमिलर मैनर द कर्म योगी knows how to perform the work and remain unattached with it and does not mire with the mud. So in the similar manner the karma yogi does a karma. This is because what binds one to law of karma. What is law of karma? It is not the action which binds, but the attachment to the fruits of those action which binds. If we are attached to fruits, then there are many kinds of thoughts linking to it are made in our mind. How we can achieve the fruit, how we should do this, we should ultimately harm to that person. There are various things are coming so that anyhow we can grab the result. यदि हम कर्म के फल की ओर आसक्त होंगे तो उसमें कई प्रकार के तमोगुण और रजोगुण भी साथ में हो जाएंगे. ऐसा कर दें, वैसा कर दें और किसी तरीके से इस फल को पा लें. बट द पर्सन हु इज नॉट अटैच्ड टू इट्स फ्रूट्स, दैट पर्सन इज डूइंग द वर्क for progress and the work is also offering at the feet of God. Karma yogi has no attachment to the fruit of action. On the other hand, a false
renunciant renounces, the person who has gone out of society to some jungle, that is the if that person is a false renunciant, though yet not matured, and in initial stage he has left the society and gone to some jungle. एक ऐसी ही स्टोरी एक मूवी आई थी, तो उसमें एक छोटे बच्चे को, लड़की को सन्यासी बना दिया गया था, तो उसने बचपन में एक लड्डू खाया था। फिर उसके बाद जब वो सन्यासी बन गई तो उसके मन में वही बात थी कि उसे एक लड्डू मिल जाए। तो वो पूरे जीवन, चूँकि अभी वो मैच्योर नहीं हुई थी, दैट गर्ल वाज नॉट मैच्योर, एंड इनिशियली इन चाइल्डहुड शी हैज़ टेस्टेड वन स्वीट, सम लड्डू, and at the death that girl, a very old baggage was there at the time of death. She has a laddu in that bag, and daily somehow she has managed that laddu, and that girl licks on daily basis that laddu. So such is a condition. So it is the immaturity that we are deprived from these beautiful worlds and its accessories, and we are going to jungle, because in this case our mind is completely attached to all the things or attraction of this. So such renunciation is a hypocrisy, so we should not do so, and our path is also not like that. Our Swamiji has said that by remaining in this world, जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस सब भगवान के चरणों में छोड़ दो. In the similar manner, we can become a karma yogi if we are not attached to fruitive action, and only we do karma for sake of our progress and for contribution to this matchless world of God. तो भगवान की बनाई इस अद्वितीय दुनिया में अपना योगदान देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए, अपना यज्ञ भाग देने के लिए ही हम कर्म करें. Karma yogi has no attachment to fruits. On the other hand, a false renunciant renounces action but does not forsake attachment. That person thinks that some persons are very clever. They think that if we leave the karma, then how the sanskar will made. अगर हम कर्म ही छोड़ देंगे तो संस्कार कैसे बनेगा? But it is not so. Our mind is continuously in running position. Our mind is a dynamic organ of our body. It cannot stay at a one point. So if mind runs, then the sanskar is made. So we do work with our mind, and that impact of work is more powerful. It is not that you have not killed anybody, so by the jurisdiction or the courts in this world you may get bail. But if your mind has killed somebody, that I will kill that person, then there is a deep traces of it, and that samskar goes with you. So it is mind which has deep impact, because हमारा मस्तिष्क गहरी चेतना पर है, उससे सूक्ष्म है. इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा. शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है. हम जिस स्तर पर, the level at which we work, it has been said that our senses are more finer, more microscopic than body, so more powerful. Mind is microscopic than senses, so mind is more powerful than senses. Intellect is more powerful than mind, so intellect is again microscopic and more powerful, so can do better, can control all these below it. And yo buddhe partastu sa, and our soul is the most powerful, so it may control all of the body organs. So Shri Krishna says here that a person in household life who practices karma yoga is superior to false renunciant who continues to dwell on the objects of the senses in the mind.
The person who is living in this world but not getting attached to it, like Janak, Raja Janak, he is in this world sitting in throne, and that is wearing a majestic crown, but not attached to all the facilities or amenities around him. So in the similar manner, Aniket, the person though living in house but is never attached to that Niketan, that house. So such person, Videha, the person whose soul is in the body, but that body is not attached with soul. Soul is separate and the body is separate. If we dwell in this world like this, then we are actually not making any trace of our karma. So here Sri Krishna is saying the person is superior who is living in this world, but the mind and senses are offering at the feet of God. Then that person is superior. Then the person who is a renunciant, but mind dwells, however, the mind dwells in the worldly amenities. When our work is when one works in the world with the body but keeps the mind attached to God, no, it is to be karma yoga. So and it is a kind of spiritual step. So it is a lead. When we do work, it is a skill, and it is a simpler manner of any kind of bhakti or any kind of spirituality. The karma yoga, it is recommended by God, because Sri Krishna himself is doing karma. He is the charioteer of Arjuna. Krishna, Lord Krishna, what is the deprivation to Lord Krishna? उन्हें क्या अभाव है? लेकिन वो संसार में रहकर भगवान राम को क्या अभाव है? But being in world, they are doing work for the benefit of people. They were philanthropists, so they are doing the benefit of mankind in the similar manner, because they want to give us this lesson. So that base note is that we also should perform work like our lords have done, and it is to be for the sake of welfare of society and not for selfishness. It should be selflessness. Next is verse 3.08. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेत् अकर्मणः. नियतं कुरु कर्मत्वं. नियतं कुरु कर्मत्वं, constantly perform कर्मत्वं, whatever are your Vedic duties, you constantly perform them. Karma jyayo, that is karma jyayo, work is superior than akarmana. Work is superior than inaction. Action is superior than inaction. So constantly we should perform work. Our social duties, our duties to for our body, that is and the duties to our family, whatever duties, moral duties, social duties, whatever duties are there, occupational duties, you may go and earn something. So all the duties you have to perform, because working is superior than inaction. शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा. शरीर यात्रा पिचते, because your sharir yatra, that is the maintenance of body, even na prasiddhet, would not be possible within action. If you simply lie down, will your body run for a year, at least a year or a month? If you simply lie down and do not work for eating, do not do your nitya karma, then how could you survive?
because with inaction our body even cannot run. So inaction is impossible. Those person who are partly living it, simply thinking that I am renunciating going to forest, they are partially living the action, because for body they have to do work. For the search of food they are going here and there in jungle. There they may interact with some other, and their mind may have some kind of running that this is good, let us do this. So there also they are weaving some web. वहाँ भी वो जाल बुना करते हैं, ऐसा कर लें वैसा कर लें. It is not better than the society. They are going there and interacting with inanimate objects and wild animals. So literal meaning is this: you perform the obligatory duties, for action is superior to inaction. So your whatever are your obligations to society, to yourself, to your family, to your occupation, you should do it, because action is superior than inaction. And through inaction even maintenance of your body will not be possible. एंड अकर्मण्यता के द्वारा तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी न चल सकेगी. तो इसलिए तुम्हें नित्य कर्म और पौरुष कर्म, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और नैतिक कर्म करते रहने चाहिए. ये आध्यात्मिक यात्रा के लिए और तुम्हारी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है. Until the mind and intellect reach a state where they are absorbed in God consciousness, up to that level you have to work. That is those maintenance work, moral works, occupational work. When your mind and intellect both are absorbed, like Gautam Buddha, like Swamiji, when your mind and intellect are absorbed in God, then you need not to perform any work that let us go and become an engineer, let us go become something, do something in an office. At that time you are now a teacher, you have to preach the word, but till you are not absorbed properly, जब तक हमारी बुद्धि और मन पूरी तरह से भगवान में नहीं रमे हैं, तब तक कर्म के द्वारा, कर्म एक माध्यम है, कर्म के द्वारा और उसके फल के त्याग के द्वारा हमें उस अवस्था को प्राप्त करना है. यदि हम कर्म भी छोड़ देंगे तो हम उस साधन को ही छोड़ देंगे जो भगवान से मिलाने वाला है. गाड़ी को ही छोड़ देंगे तो हरिद्वार कैसे पहुंचेंगे. सो until the mind and intellect reach a state where they are absorbed in God consciousness, physical work performed is an attitude of duty, is very beneficial for internal purification. That is, हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए हमारे द्वारा किए गए भौतिक कर्म और उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है. वे हमें उस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं. So, hence the Vedas prescribe duties for humans to help them discipline their mind and senses. So it is done, and we have to have a scale. Always check that the actions, are they making an impact on us and how they are performed, what is our attitude towards it. So every time we have to check ourselves that how we are doing, what is our opinion, attitude towards that work. Laziness is described as the biggest pitfall on the spiritual path. So the spiritual person never sit or prefers inaction or laziness. Sluggishness is not the path of a spiritual aspirant. Laziness is the greatest enemy of human and is especially pernicious since it resides in their own body. So the person who is lazy, so that person, laziness, it is the sticking insect. Like ये एक ऐसा कीड़ा है जो चिपका हुआ है, वो फिर वो छोड़ेगा नहीं. आलसीपना तो एक प्रकार का एक ऐसी आदत है जो कि उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती. सो आध्यात्मिक व्यक्ति को अकर्मण्य तो होना ही नहीं चाहिए. वर्क इज मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड एंड इज द गारंटी अगेंस्ट डाउनफॉल. यही हमें
गिरने से बचाता है। इवन द बेसिक बॉडीली एक्टिविटीज, ईटिंग, बाथिंग एंड मेंटेनेंस, वॉट एवर सिचुएशंस कम इन अवर माइंड, वी शुड नॉट लीव एक्शंस। इवन द ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रोफ में अकर इन अवर लाइफ, हमारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ऐसी स्थिति में भी हमें निरंतर कार्यरत रहनी चाहिए। जैसे कि जो बाइडन, उनके बेटे की मृत्यु हो गई, वो अगले ही दिन ऑफिस पहुंच गए। सो हमें कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म तो हमें आगे बढ़ाने का साधन है। तो घटनाएं घटती रहती हैं, प्रश्न पत्र मिलते रहते हैं। कठिन प्रश्न पत्र आने पर या प्रश्न पत्र में असफलता होने पर हमें पढ़ाई नहीं छोड़ देनी है। तो ये जीवन एक पाठशाला है और हम एक विद्यार्थी हैं, पढ़ते तो हमें रहना है। इवन द बेसिक बॉडीली एक्टिविटीज are require work. These obligatory actions are called nitya karma. To neglect these basic maintenance activity is not a sign of progress but the indication of slothfulness, and it is the indication, अगर हम ये सब छोड़ देंगे तो अकर्मण्य कहलाएंगे, slothful. We will be mired with mud like stagnated. हम जीवन में सड़ांध आ जाएगी। और whatever we consider, हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख आ गए हैं, लेकिन अंत में सबका गणित जीरो होता है। द मैथमेटिक्स द एंड ऑफ लाइफ इज जीरो। सो नथिंग इज अटैच्ड, गुड और बैड, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। इट इज वी हैव टू ट्यून अवर माइंड अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस, दैट्स वाई वी आर इन ग्रीफ। यदि हम चीज़ों को सहर्ष से स्वीकार करना सीख लें, यही तो समर्पण है। हमें समर्पण की कमी है, हमें इनर्शिया है, जड़त्व की वजह से हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हो, हम चौधरी हैं और ये चीज़ें हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। लेकिन भगवान की नियति कुछ और है। भगवान हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं, वो कहाँ तक हमें ले जाना चाहते हैं, उनकी क्या पात्रता है। और हम यहाँ अपने आराम के लिए और अपनी ट्यूनिंग के लिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, क्योंकि हम सबसे अधिक भगवान की पूजा करते हैं। तो ये समर्पण नहीं है, न ये समर्पण का पैमाना है। जो आता जाए उसको वैसे ही स्वीकार करते चले जाना है और उनको धन्यवाद भी देना है, मजबूरी नहीं है। खूब धन्यवाद दो, किसी परिस्थिति से मत तौलो भगवान को, खूब धन्यवाद दो और धन्यवाद दो और खूब कर्म करते रहो। ऐसा बच्चा भगवान को प्रिय होता है, जो भगवान के द्वारा भगवान फिर उसे और अच्छे से कई पादान उठाते चले जाते हैं। और जब एक ही चीज़ में हम रोने लगेंगे तो भगवान अगला प्रश्न पत्र नहीं देंगे। हम इतने कीमती जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और पता नहीं फिर रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म के बीच हजारों साल का गैप होता है। फिर ऐसी परीक्षा में बैठना कब हो पाएगा। तो हम इस जीवन का दुहन कर लें, और रोना धोना तो ठीक नहीं है। To neglect these basic maintenance activities is not a sign of progress but an indication of slothfulness, leading to emaciation and weakness of both body and mind. So sluggishness and inaction, they weak our mind also. If we are sluggish, if we are inactive, then our intellect and mind both become blunt. They cannot work properly. These are not having a cutting edge. So to make them sharp and active, we have to work more and more and offer more and more to God. कैसे ऑफर करना है? जैसे कि संत से किसी ने कह दिया, भाई तुमने तो हमारा बड़ा उपकार किया, तो संत इधर उधर देखने लगेगा कि किससे बात कर रहे हैं। तो उसके संत के कार्य में कोई संस्कार नहीं बनता। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पानी पर एक लकड़ी से लकीर खींच दी जाए तो वो लकीर वैसे ही मिट जाती है। इन द सिमिलर मैनर एज वी डू वर्क, वी शुड फॉरगेट इट। वी शुड नॉट नोट डाउन ऑन डायरी दैट हमने इसे एक ग्लास पानी दिया। चलना सिखाया हमने जिनको संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल के। दिस शुड नॉट बी अवर एटीट्यूड कि हमने तो इतना अच्छा किया और आगे देखो कि वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। दैट शुड नॉट बी, बिकॉज इट इज़ डन by the power of God. So, and it is for the God, work is by the God, for the God, and it is for our progress only. By this attitude we should work. Now let me recite a bhajan.
धीरे धीरे जीवन नैया, धीरे धीरे जीवन नैया, चली प्रभु की ओर, चली हरि की ओर। धीमे धीमे डोल रही है, धीमे धीमे डोल रही है, तट के बंधन तोड़, चली प्रभु की ओर। जल गहरा चंचल हैं तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। जल गहरा चंचल हैं तरंगे, व्याकुल मन की विरही उमंगे। कैसे बिन पतवार के नैया, कैसे बिन पतवार के नैया, जावेगी प्रभु ठौर, चली हरि की ओर। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। आंधी चलती दूर किनारा, छूटा जग से नाता सारा। मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो, मेरा तुम प्रभु हाथ थाम लो। ले चलो अपनी ओर, चली प्रभु की ओर। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। जी घबराता मृत्यु दिखती, पल भर में अब नाव डूबती। मेरा तो प्रभु तू ही सहारा, मेरा तो प्रभु तू ही सहारा। चरणन संग लो जोड़, चली हरि की ओर। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती। डर मत मन ये काली राती, मन मंदिर धर नाम की बाती। लेंगे थाम वो
खेवैया, लेंगे थाम वो राम खेवैया। बांध प्रेम की डोर, चली हरि की ओर। धीमे धीमे डोल रही है, धीमे धीमे डोल रही है। तट के बंधन तोड़, चली प्रभु की ओर। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम 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 राम, बहुत आनंद आ गया। राम 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 मम्मी। राम 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 भी में लेके सुना रहे हैं राम को भी। हाँ रख हाँ ठीक है।